Hello, class 9 students. Today we'll discuss here class chapter work power energy science chapter. Okay, science class 9 students, CBSE students, also ICSE students also you can listen same thing. Topic is same, but also concept also same. Okay, so little bit different questions and different on extra things may be given in ICSE and CBSE, but almost same. So you can listen here work, power, and energy. First, we'll discuss here work. Work. So, what is work? Work. We can say that work is also energy consumption, also energy. So, work is said to be done. Work is said to be done when a force is applied on a body, and body makes a displacement in the direction of the applied force. Suppose there is a force, right? So there is a force, and this body is moving. This is a force is moving here, and let us this point is A, and another point is B. So A to B displacement is here S. बुझिएला जदि से बॉडीटा A रू B को गला, right? तो A रू B को गला, this body is now from A to B. गोटे बॉडी रे फोर्स अप्लाई कलो, फोर्स अप्लाई हला परे देन से बॉडीटा किछि वाटा मूवमेंट कला. जदि किछि वाटा मूवमेंट कला ताले हम कहबा जे फोर्सटा डिस्प्लेसमेंट कला. त एठी W is equal to सीधा लिखिबा फोर्स dot, that is a scalar product. Dot, this is S. So it F stands for here. F stands for force. This is F stands for force, and S stands for displacement, and S stands for displacement. S stands for displacement. The force and displacement. So it is a scalar product, dot product, or scalar product. In plus 2, you can understand very deeply about the scalar product and vector product. Now here we will discuss only little bit. So W is equal to F dot S. So F dot is force into displacement. In this case, there is an angle. There is an angle produced between force and, look at the board. There is an angle between force and displacement. Here the force is like this and the displacement also like this. So in these two pictures, the theta is equal to 0 degree. In these two rays, the angle between them is equal to 0 degree. Understood? When the angle between them is equal to 0 degree, then we can say that the W is equal to, actually what happened? The W is equal to F cos theta into S, right? So for this angle theta, so there is a actually formula is there. Why this is now between two lines, two forces, there is angle is acting theta. So due to F cos theta, the force is acting here, and so F cos theta, how F cos theta is there? So F and cos 0 degree into S. So this is F cos 0 degree is 1, and that is S. So finally Fs. We can say that W is equal to Fs. So तम मानकर गोटे डाउट अच्छी सर कौन एटा F cos theta कौन? So actually right angle triangle रे जदि 90 डिग्री हुए ए एंगल टा थीटा देही हुए ताहले कोन हबो ना ABC पिक्चर रे ध्यान देकी देखो एटा टिके एक्स्ट्रा कहि दोची ABC पिक्चर रे कोन हुए ना cos थीटा टा cos वास एटा माने गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ना साइड रो रेशियो को नेकी ताको एंगल रिलेटेड साइड रेशियो को नेकी हमें गोटे रिप्रेजेंट करा होची जे ता साइड रेशियो केमति कैलकुलेशन करिया ए थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू BC by AC माने बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर. So it cos theta is equal to this one. So BC is equal to, what is the value of BC? BC is equal to AC cos theta. तो BC ର value AC cos theta. तो सर एठी कोन काम सेठी पचायो सर एठी कोन काम ना एठी हे काम देखो गोटे मु से बॉडी टाको लोची एठी ए बॉडी टाको लोची सपोज दिस इज ए बॉडी and this body is a toy, just like a toy car. Okay, so here the body's force is applied here. এই বডিটা কো একটা টয় কার রে এই সেন্টার দিশা হবো অ্যাঙ্গেলটা এতে রয়েছে এই যে অ্যাঙ্গেলটা হলা জাস্ট লাইক দিস এই বডিটা এଠି ଅଛି সেই সেন্টার এଠି ফোর্স টানিলা এଠି অ্যাঙ্গেল তেরিলা, রাইট? তো এই জায়গায় মার্ক করো এই জায়গায় গোটে অবজেক্ট को এইটি ए ऑब्जेक्ट को जने फोर्स एंती एंगल ले
एमती टाणुची कौन ना बेस सांगे गोटे एंगल प्रोड्यूस करके तो ये जो टाणला ये दीटा फोर्स काम कर फोर्सटा काम कला ना तो ये जो फोर्सटा दीटा कंपोनेंट आसला गोटे एपटू काम कर गोटे उपरू काम कर राइट तो ये फोर्स भिड़ुची ना तो देख मार्क कर तो याडे भी जाऊँगी एमती याडे भी जाऊँगी प्लस ऊपर को भी जाऊँगी ना तो फोर्स टाइम जाऊँगी माने तो दीटा काम होची याडे भी जाऊँगी ऊपर को भी जाऊँगी राइट तो दीटा कंपोनेंट काम करछि ऊपर को ऊपर जाऊँगी प्लस याडे मूवमेंट करछि दीटा कंपोनेंट तो ए फोर्स रो दीटा कंपोनेंट ला जति मोर जाको सिलेक्ट कर ए जाको इमेजिन कर देखो जॉइन कर दियो दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री हेला नै हे गेला तो ए पिक्चरटा जस्ट लाइक दैट एरा बुले दे उल्टा कर दिछि दिस इज योर 90 डिग्री तो दिस इज थीटा मु कहतली बेस एडा हो बेस सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी राइट so in BC then this is your A so cos theta AC means here F this is F तो AC और BC this force ये जो force था ना तो BC is equal to what this is equal to AC cos theta तो माने ये जो force टा काम कला टा AC cos theta AC cos theta और that is equal to F cos theta clear so F cos theta force जो एटा F cos theta गोटे कंपोनेंट ऑफ द फोर्स सो ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स रे एटा मन रखला तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स सो वेरी शॉर्टकट आई एम राइटिंग हियर ओनली दिस पार्ट इज हियर सो व्हेन फोर्स इज applied here that force this one this is F cos theta and this is F sin theta clear this is F sin theta and this is equal to theta so like that here F cos due to F cos theta this force theta 0 degree same procedure theta in place of F cos theta that formula I have written so when body is look at here when body is there body is moving due to this force due to F cos theta the body is moving horizontally right now this is Fs clear so W is equal to Fs cos theta that part clear now if theta is condition if theta is 0 degree if theta is equal to 0 degree then W is equal to Fs. So in that case 0 degree case, so when force is applied and there is when force is applied and the direction of the force, the body can move. So we can say that the positive work. Next part is when if theta is 9 degree, jati theta 90 degree, so W is equal to F cos theta into S. So finally F cos 90 into S. तो फाइनली F cos 90 हला 0 into S तो फाइनली 0 तो W is equal to 0 ता माने एटा या माने कोन अरे एतले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रे परपेंडिकुलर हे जिवे ना सपोज गोटे इमेजिन करो गोटे कुली लगेज नेकी जाउची लगेज ओके तो लगेज रे जो फोर्स ता पडुची ता मुंडे लगेज दैट लगेज फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड but the pulley is moving upward when the pulley is moving upward here pulley is moving in perpendicularly that means horizontally when pulley is moving horizontally but the force is acting downward so like that pulley is moving in that direction look at here this is your pulley suppose this is a pulley and pulley is moving like that so pulley is moving like that but the luggage is what luggage is acting downward but the pulley is what pulley is moving this one so this direction and this direction they are 90 degree clear this is your luggage this is your motion right so eta luggage ye luggage la edi luggage la load ta padla eti downward can pulley jaଉଛି sidha so there is a 90 degree since there is a perpendicular between them direction of the force and direction of the motion so we can say that work done is equal to 0 because काहे को वर्क डन 0 होला बिकॉज़ थीटा रो वैल्यू 90 डिग्री सो cos थीटा रो वैल्यू थाए तबे 9 to 10 क्लास रे पडिबो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 सेति पई वर्क डन दा 0 सो वर्क डन 0 माने नो वर्क सो वर्क डन 0 और नो वर्क हे गेला तो ये सरी गला this is 90 so when 180 degree when the force is look at here when the force is in that direction and this is body is moving like this sorry this is your 180 degree
Okay, and there is a force and there is a displacement. So how force and displacement 180 degree while କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ହମ୍ପସ୍ ପଡ଼ିବ ହମ୍ପସ୍ ସେ ହମ୍ପସ୍ ର ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ तो फ्रिक्शन गाड़ी आसुचे एपटू हम्प्स एटा तो एटा हम्प्स रे बाजिला तो हम्प्स रो जो फोर्स टा बा फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करछि तो फोर्स टा डायरेक्शन कला सपोज ईस्ट को बट गाड़ी जाउछि वेस्ट को ता माने ईस्ट डायरेक्शन को ओवरटेक करिकी गाड़ी पळेला ता माने तांको भीतर एंगल हला केते तांको भीतर एंगल हला 180 degree so 180 degree means this direction so force is moving in direction but body is moving in that direction or force is moving in this direction but body is moving in this direction so angle is 180 degree so we can say that w is equal to fs cos theta is equal to 180 degree cos 180 minus 1 so negative work if theta is equal to 180 degree so w is equal to minus fs that means w is equal to negative work negative value the value is negative value okay so this one is finished so w0 no work this one when force is 0 if the force by chance this if the force is equal to 0 if force is equal to 0 if the body force 0 force so no work f is 0 so if f is equal to 0 then no work if displacement is 0 no work if theta is 90 0 also no work 90 वाला को कहि देली केमति 0 होचे तापर फोर्स टा आम आंसर W लुक एट हियर W इज इक्वल टू FS रे W इज इक्वल टू F cos theta S F cos theta into S तो ये तीनटा कथा एटा ला इंपोर्टेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके जोटा कि हमरो 90 डिग्री रे एठी ए थीटा टा 90 हेले वर्क डन 0 फोर्स 90 हेले वर्क डन 0 डिस्प्लेसमेंट 9 सॉरी फोर्स टा 0 हेले वर्क डन 0 ये डिस्प्लेसमेंट 0 हेले बे वर्क डन 0 कारण थीटा टा 90 होवा दरकार वर्क डन 0 पई फोर्स टा 0 हेले भी 0 होबो आउ एटू एस टा 0 हेले भी वर्क डन 0 हे जिवो खाली थीटा टा 0 हेले 0 होबो नै थीटा 0 डिग्री माने किछि काम हला थीटा 0 cos 0 हेले 1 किंतु cos 90 हेलो 0 सेथि पई तो एई वैल्यू टा 0 होबो केतोळे एई कंडीशन जोगो एई कंडीशन रे हला नो वर्क कंडीशंस दे आर द कंडीशंस ओके these are the conditions a condition hi kebala no work is done so ei part ta sari gala mote bate bhabe hochi gote work ro gote part completed so next video re am discuss kariya power next energy like that tin charta video re this chapter fully completed okay well done good then you can go finished